ट्विटर अकाउंट है कॉल्ड पोअरली एज थिंग्स. उसने अभी पोस्ट किया है. रॉबिनहुड का एक ट्वीट है फ्रॉम 2016 दैट सेज लेट द पीपल ट्रेड. हेलो एंड वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ स्टॉक्स. आपको क्या लगा ये बंद हो गया था? नो 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 नो, वी वर ऑन अ हाइएटस. व्हाट वी ऑन हाइएट. ऑलराइट, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. हमारे साथ है अंशुमन हु इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड निशांत तनवर who is a finance expert advisor person. GameStop का stock price क्या है? Anshuman has been following this closely. Around $200. It went down to 120 और अभी वापस $200 के अराउंड गया. Shit basically crazy right now. क्या बकचोदी चल रही है? Elon Musk ने कुछ ट्वीट कर दिया, एक बंदा कुछ $50 मिलियन बना लिया उसने ओवरनाइट. मतलब सबके टट्टे शॉर्ट हो चुके हैं. Robinhood has literally shut down stocks at this point. But what is going on? Anshuman, take us through it. Let's begin the episode. Okay? We are just going to wait until Anshuman gets his shit together. इसीलिए लाइव स्ट्रीम नहीं करते, इसीलिए तो हम रिकॉर्ड. ऑलराइट, तो निशांत भाई GameStop क्या है आपको पता है? तो मुझे जितना पता है वो है कि यूएस का एक गेमिंग का रिटेल का शॉप है बेस्ड आउट ऑफ ग्रेव पॉइंट व्हिच इज सबर्ब्स ऑफ टेक्सास में, डैलस के पास है कहीं. तो साइड में विकिपीडिया खुला है. दिन की नॉलेज. तो निशांत भाई GameStop क्या है बताता हूँ. ओके, GameStop पे गेम्स मिलते हैं और ऐसा फिगरीन मिलता है, ऐसा टॉय वगैरह मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और जब मैं यूएस जाता रहा जब भी, तो 50% ऑफ माय टाइम यूज्ड टू बी स्पेंट एट अ GameStop, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मिलते हैं जो इंडिया में नहीं मिलती थी. ठीक है. पर नेचुरली कोविड वगैरह हो गया तो GameStop के लग गए लौड़. ठीक है. लिए आप सोच रहे हो हम अभी 2021 में हैं और 2021 में देयर इज एन ऑफलाइन स्टोर जो सीडीज बेच रहा है. फर्स्टली प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स दोनों ने 4-5 साल से अपना वो चालू कर दिया है. डायरेक्ट खरीद सकते हो, सीडी की जरूरत ही नहीं है. सो फर्स्टली इट्स अ वेरी 2010 का बिजनेस टाइप. तो कोविड के पहले भी 2016-17 से उनके लॉसेस वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे थे, बट स्टिल द कंपनी वाज स्टेबल. ऐसा नहीं कि एकदम ही खराब थी कि बंदी हो जाएगी. उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था. बट व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 1 वीक वाज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड. इस स्टॉक को कभी इतना भाव मिलना ही नहीं चाहिए था. In fact, someone pointed out that in the latest PS5 में they still come with an option of a disc. That, it's not entirely dead yet like the market. Point number 4, अंशुमन ने बहुत eloquently लिखा है. दोस्त लोग आपस में सीडी एक्सचेंज करें ना कि तन्मय भाई ये मेरे पास ये ले लो और आपकी एक सीडी वो वाले गेम की मुझे दे दो, वो वाला. हाँ, वैसा ही है. पर मेरे दोस्त नहीं है तो I don't know what that feeling is like. The reason why GameStop is trending, if I have to explain this with one picture, it's this. 2003 से लेके 2021 तक पूरा चार्ट है. And on 8th January this year, it was trading at $17. 2 घंटे पहले मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया. It was at $412. Stonks हो गया. So it was trading at $17-18 10-15 days back. Since then, the stock has gone up by at least 2,000% and is currently trading at nearly $400. हाँ, अभी थोड़ा कम हो गया पिछले 2-3 घंटे में, but yes. That's the volatility we are talking about. कि मैंने 2 घंटे पहले कुछ स्क्रीनशॉट डाला और आज उसका 50% वैल्यू है within 2 hours. And it is led by amateur investors from a subreddit called Wall Street Bet. ये amateur investor मेरे को मतलब I don't know. They're retail investors. Yeah, retail for sure. Like Would you call Harshad Mehta amateur investor? No. They saw that this stock was shorted in large quantities by big hedge funds. तो 2-3 hedge funds जिनके नाम काफी were going around, Melvin Capital and Citron. इन दोनों ने GameStop के स्टॉक्स को शॉर्ट किया था in very large quantity. तो शॉर्ट सेलिंग क्या है पहले वो समझते हैं. जब ये सब चल रहा था निशांत भाई, an example became very popular. वो ट्विटर तक पहुंच गया था. Simpler way of understanding what short selling is. This is actually from the Reddit page itself. तो समझो 5 बनानास का कॉस्ट है $10. ठीक है, बंदर है, उसके पास वो 5 के 5 बनानास है. अब एक सांप आता है एंड ही सेज कि क्या ये बनानास मैं थोड़े टाइम के लिए बोरो कर सकता हूँ, और फिर वो बोरो करके वो बेच देता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इस प्राइस में बेचूंगा, ठीक है, तो आगे जाके उसकी प्राइस गिर जाएगी, फिर मैं वो सस्ते में खरीद लूंगा और जो जितना बनाना का डिफरेंस है, जैसे अभी $10 है, मैं उसको बेच के $5 कर दूंगा और जो $5 का डिफरेंस है वो मेरे पॉकेट में चला. This is basically short selling, yeah. अब जो ये बंदर लोग हैं, ठीक है, इन लोगों ने देखा, ये नोटिस किया कि यार ये तो ऐसी हरकत करा. तो इन लोगों ने क्या किया, अपने पूरी कम्युनिटी को बोला तुम जितने बनाना खरीद सकते हो खरीदो, क्योंकि जब ये सांप आएगा आगे जाके तो उसको उसने बोरो किया है तो उसको खरीदना तो पड़ेगा. तो आके मेरे से हमारे से ही खरीदेगा और हम खरीद के उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे. और एग्जैक्टली यही हुआ है. उन लोगों ने बिलियंस का ट्रांजैक्शन था किया और उन्हें लगा कि वो शॉर्ट करने से वो तो गिर ही जाएगा. अब रेडिटर्स, ये जो पूरा ग्रुप है, एंड दीज गाइज आर वेरी स्मार्ट, दे आइडेंटिफाइड दिस पोजीशन
and बोला कि अब जितना खरीदना है खरीदो. And then the entire group started buying as many stocks as possible. तो जिससे स्टॉक की वैल्यू बढ़ने लग गई instead of going down. So now Going every down. hour Melvin Capital was losing money because they expected the stock to fall down. मेलविन कैपिटल बिक गया क्या अभी? They recently announced कल कि they have closed the position, which means उन लोगों ने जो प्राइस में चल रहा था उस प्राइस में उन्होंने खरीद के अपना अग्रीमेंट कंप्लीट कर दिया. पूरा कर दिया. मेलविन कैपिटल एंड एक दो और हेज फंड्स का मिला के GameStop की वजह से $5 billion का लॉस हुआ है. एंड मेलविन कैपिटल सेड कि we have money to survive, but अभी न्यूज आया कि they had to borrow $2 billion from their SBI. इधर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था. सो टू कवर दोज लॉसेस वो लोग अपने जो अच्छे वाले स्टॉक्स है लाइक टेस्ला, फिर वो जो पैलेंटिर, इज दैट द राइट नेम? हाँ, ये सारे स्टॉक्स को वो सारे स्टॉक्स उनको बेचना पड़ा, जिसकी वजह से कल परसों ये सारे स्टॉक्स में भी 1-2% का डिप आया. एवरीथिंग वाज ऑन लेवरेज. दे नेवर थॉट कि ऐसा कुछ हो भी सकता है. इलॉन मस्क, वुल्फ ऑफ स्पेसएक्स, कैम शो, हर्षद भाई ने बोला है तो स्टॉक बढ़ेगा. सी ये बंदा उस दिन ट्वीट किया GameStop with a link to the Reddit and that day it went up by 100%. When the WhatsApp privacy thing was going on full हर जगह इंटरनेट में, he wrote buy Signal. Okay, just there's this random company called Signal Technology which is not that Signal app that went up by 90%. Yeah. मेरे को डाउनलोड करा दिया लोगों ने सिग्नल. क्या अभी WhatsApp में फील नहीं आ रहा? सिग्नल डाउनलोड करो WhatsApp में फील नहीं आ रहा है. हाँ, प्राइवेसी, अपने को प्राइवेसी चाहिए. अपने को ऐसा प्राइवेट. Alexa, why did my girlfriend leave me? बोल रहे हैं जो हॉल में प्राइवेसी की बातें कर रहे हैं. So this all happened yesterday. Today everyone was waiting कि market open होगा. Robinhood has denied everyone from making any trades on GameStop. You can close your position on this stock, but you can't purchase anymore. So people are really fucking angry. Fucking Stool president, who usually like speaks a lot about Robinhood, he also came out and said a bunch of shit about Robinhood, saying founders should be jailed and whatnot. ट्वीट इधर ही है. Oh, Stool president का ट्वीट यही. Then people started panicking कि अब तो मुझे कैसे भी बेचना है, शायद ये बंद ही हो जाए. So then people started placing sell orders, but there were no buyers against it because buying was not allowed. तो बहुत ज्यादा गिरने लगा. It went down to $120 2 hours back from $400. अभी कितना है? Abhi it's like around 290 last I checked 10 minutes back. As a broker, how can you, मतलब can you decide and do that कि अच्छा नहीं अभी बंद कर रहा है, you cannot, because it looks like जो मेलविन कैपिटल नहीं कर पाया वो इन्होंने ऐसा गिराने के लिए. तो यही है कि उसके रूल्स बहुत थोड़े से ब्लर है. 20% या 10% नीचे जाता है, then brokerages have the option to stop trading or halt trading for an hour. But here, since the last 5-7 days, the stock has been, it has been swinging around 50-100% in a single day. So achanak suddenly, how does this rule come up? That's something which is thoda questionable. Matlab, in the end, it's their platform. They can do anything. So now, Nishant bhai, what's happened is that there's a debate going on about who's right in this situation, right? Because the people on Reddit, वो लोग सब लोग बोल रहे हैं that for years, right, Wall Street and hedge funds, वो लोग ऐसे स्टॉक को शॉर्ट करते और वो लोग पैसे बनाते हैं उसके ऊपर. But this time they got it wrong. So now they are suddenly turning around and saying this is illegal. You know, what people are saying that is retail investors have every right to do this. There's nothing illegal in what they're doing. This is perfectly fine. We saw that you were shorting it and we think that, you know, we have a right to go buy it. First of all of this nonsense, all of this noise, all of this whining by Wall Street, it's making me sick. 140% of GameStop was short. I didn't hear one person on TV complaining about Wall Street trying to crush GameStop. 140% short. I told my subscribers, buy this stock, and they made a fortune. Now, you can't allow Wall Street to short 75% of a stock, and nobody says anything. Crush these companies into the dirt, and then when the individual investor makes money, everyone's up in arms. Oh, they're going to lose their shirt. Don't you think people are trading? If they traded 80 billion shares today, people are ringing a register. So yeah, some people are going to lose and some are going to win. They want to change the rules of the game now because the general public is making money after decades of the shorts crushing thousands of stocks into the dirt, and no one ever
whispered anything because those stocks didn't have Wall Street sponsorship. So I am thrilled. If you were going to try to destroy a company by shorting 140% of its stock, you have to accept the fact that individual investors are playing the same game that you're playing and now you're losing. एक तो पहली बात तो वॉल स्ट्रीट वालों को हट मादरचोद बोलने में कितना मजा आता है. Like it's so fun to stick it to the rich guy. बट आप ये सोचो, इशू इधर सिर्फ वॉल स्ट्रीट की नहीं है, इशू इधर SEC की है कि वो एक स्टॉक का 75% से लेके 140% स्टॉक का Dude, they were shorting shares that didn't even exist, right? 2008 crisis also, the beginning was because people shorted like mortgage bonds, right? Like like Exactly. this is like it's been happening since then. 2008 का जो क्राइसिस है, अगर मैं पांच वर्ड में बोल पाऊं तो इट्स लाइक द बैंक्स गॉट वेरी वेरी ग्रीडी. Also, one more thing, yesterday GameStop became the most traded asset in the stock exchange. Almost $20 billion, and that's crazy. मतलब सिर्फ retail investors नहीं है, now the big investors are also trying to enter and make a quick buck out of it. So now we'll watch a video between a journalist and Chamat, who's the CEO of Social Capital, as you guys can see, and he's very big on crypto, and he's very popular. So this is the argument coming out from the other side. So just hear this clip out. Can see their stocks rise in this magnitude, and all of that is just fine. That there's nothing wrong with the integrity of the system if that is occurring. The lack of integrity in the system is the precursor that caused GameStop to be sold short 136%, and for people to try to pile on and destroy a company in front of our eyes. That to me feels wrong. That feels pretty un-American, if you ask me. I think GameStop is a reasonable business. The fact that they shouldn't be allowed to exist because all of a sudden, like, we decide that they should be obliterated into the ground. Well, they should be allowed to exist. They should be allowed to exist at whatever their stock should be valued at based on what their earnings are. And the stock was like the free market $17, telling you what it's $18 not that long ago. Who says that? Who says that? He's talking about Tesla now. You don't know what it's worth. Let's be honest, okay? You don't think that Tesla's growth prospects? Scott, I have my own model for the company. I'm allowed to underwrite however I want to own it. Everybody that bought that stock is also underwriting how they want to own it. And the point is, just because you're wrong doesn't mean you get to change the rules. Yeah, but it doesn't mean that these investors who were short the stock were necessarily wrong. This is the thing, right? सब लोग ऐसे, is this stock really worth this much money? You tell me. It's market sentiment. It's never about the actual value. जो लग रहा है, मेरे को भरोसा है कि ये करने वाले किल तो डाल रहे बैच, सब लोग योलो करके पैसे डाल रहे. Like I think to some extent they're right, which is that when you are shorting, you run the risk of losing, and they lost. Exactly, right? Yeah. And that's what happens with retail investors in mass, in scale. एक पार्टी है जो बहुत बड़ा खो गई है. That's why this discussion is even happening. Yeah. And this is a very unusual thing because retail investors are winning against the system. I think Anshuman, what's happened is कि system इतना complicated था ना कि अभी पहली बार, I think for me, just this whole thing is just learning. Oh, fuck, hedge funds are sitting and shorting a lot and making a killing week on week. I don't even know. मेरे को जानना है कि कहाँ से पता चलता है कि कौन सा hedge fund किसे शॉर्ट कर रहा है, ये इन्फो कहाँ से मिला? अगर आपको इंडिया का देखना हो तो NSE ऑप्शन चेन में FNO का हर एक स्टॉक का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट इन दैट स्टॉक वो मिलता है. सो दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन. अच्छा, तो किसी ने ढूंढा ये और बोला कि भाई सब लोग एक साथ करेंगे तो मजा आएगा. बस वही है. If you have to win against this system, आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि they are shorting 140% of the total free flow. इसलिए उन्होंने बोला आओ गाँव वालों आओ और अब खरीदो. There was a stat going around saying 50% of Robinhood users all had bought GameStop stock and like now none of them can fucking buy anymore. तो सब सेल ही करेंगे और क्या. Anyway, so that brings us to the end of today's episode. What a fascinating time. Like I've never seen something like this. And even in the limited time कि मैंने ये सब चीजों पे ध्यान दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा है. And I think generally across the spectrum, with markets reaching such all-time highs, with Bitcoin reaching all-time high, with now this, it's just a very exciting time to learn about money. Like this is the time to get into it because you can feel it becoming extremely mainstream conversation. So please make sure you hit like on this video, follow us on Instagram. And so मेरा तरीका ये है कि मेरे
को फाइनेंस न्यूज फॉलो नहीं करना है, मुझे मीम फॉलो करना है. तो रोज अंशुमन मीम डालता है, मेरे को पता चलता है अच्छा आज ये बकचोदी हो रही है, अच्छा ये आईपीओ निकल रहा है, अच्छा ठीक है. सो प्लीज चेक अस आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑफ कोर्स क्लूलेस का डिस्कॉर्ड है जहाँ पे लोग आपस के बीच में बात करते रहते हैं अबाउट व्हाट आर दे बाइंग एंड व्हाट आर दे अप टू. सो कम जॉइन द कम्युनिटी, maybe you'll find someone to talk to. On that note, gentlemen, thank you very much. Stonks के और एपिसोड चाहिए तो बता दो भाई कमेंट के अंदर और क्या कवर करें नेक्स्ट. ये इतना मैसिव इंसिडेंट था कि हम लोग को स्टॉन्क्स के हाइटस तोड़ना पड़ा हमको. तोड़ के निकलना पड़ा. So you have to understand how important and massive this was. How crazy it is. All right, friends, thank you very much for watching. See you next time.